Srimad Bhagvatam, Canto 3, Chapter 27. Understand the material nature. We read today the text 22. We start by the word in Sanskrit. Jnanena, Drishtatattvena, Vairagyena, Valyasa, Tapayuktena, Yogena, Yoga Tivrena, Atma Samadhina, Jnanena Drishtatattvena, Vairagyena Valyasa, Tapoyuktena Yogena, Ivrenatma Samadhina, Vairagyena Valyasa, Tapoyuktena Yogena, Ivrenatma Samadhina, Jnanena Drishtatattvena, Vairagyena Valyasa, Tapoyuktena Yogena, Ivrenatma Samadhina. Jnanena Drishtatattvena, Vairagyena Valyasa, Tapoyuktena Yogena, Ivrenatma Samadhina. Someone else? Mataji, Jnanena, in knowledge, Drishtatattvena, with vision of the absolute truth. Vairagyena, with renunciation. Valyasa, very strong. Tapayuktena, by engagement in austerity. Yogena, by mystic yoga. No, by mystic yoga. Yoga Tivrena, firmly fixed.
Atma Samadhina, आत्मसमाधि by self-absorption. आत्मलीन होने से. So his translation and purport by His Divine Grace to be performed strongly in perfect knowledge and with transcendental vision. One must be strongly renounced and must engage in austerity and perform mystic yoga in order to be firmly fixed in self-absorption. यह भक्ति दृढ़तापूर्वक पूर्ण ज्ञान से करती दृष्टि संपन्न करनी चाहिए. मनुष्य को प्रबल रूप से व्यक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए. Purport. Devotional service in Krishna consciousness cannot be performed blindly due to material emotion or mental concoction. भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुंध भक्ति नहीं की जा सकती. Yeah, that means according with Shastras. अर्थात शास्त्र के अनुसार. It is specifically mentioned here that one has to perform devotional service in full knowledge by visualizing the absolute truth. यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए. We can understand about the absolute truth by involving transcendental knowledge, and the result of such transcendental knowledge will be manifested by renunciation. हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होगा. Renunciation of what? We have nothing. Everything. Krishna is the only proprietor. वैराग्य का अर्थ है वास्तविक हमारा कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण ही परम स्वामी है. That means renunciation for everything what produce attachment. How to renounce of something if we have nothing? वास्तविक हम त्याग वैराग्य किस चीज कर सकते हैं, हमारा कुछ है. That means renunciation means renounce of everything what produce attachment. वास्तविक वैराग्य का अर्थ यह हुआ कि जिस वस्तु में हमारी आसक्ति जागृत है उन समस्त वस्तुओं का परित्याग. Because we have the tendency to become attached. This is the tendency of हमारी प्रवृत्ति है बद्ध अवस्था में कि हम किसी वस्तु से तुरंत आसक्त हो जाते हैं. the tendency of the soul is to be attached. आत्मा की प्रवृत्ति है, आत्मा का स्वभाव है कि वह सहज आसक्त हो जाता है किसी विषय से. So when we are in the material world, there is so many things to be attached. जब हम भौतिक जगत में रहते हैं असंख्य वस्तुएं रहती हैं जिनसे हम आसक्त हो सकते हैं. So renouncing means when one renounces completely of no any more attractions. तो फिर यहाँ पर वैराग्य का अर्थ है जब पूर्णतः समस्त वस्तु में आसक्ति है उसे परित्याग करना, किसी प्रकार का आकर्षण न रहने. There is two energy, Bahiranga Maya and Antaranga Maya. दो भगवान शक्तियाँ, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति. So one must to divorce, we can say divorce of this Bahiranga Maya, the material energy. We must to divorce it. Divorce, yeah. Divorce. Sometimes people to divorce an employer 10 years, 20 years, 30 years to be convinced, I don't want any more this contact.
तो कभी बहुत समय लग जाता है डिवोर्स लेने में, 10 साल 15 20 साल, और फिर उसके बाद में उसको समझ में आता है कि इस संबंध को मुझे रखना ही नहीं है, तब वो संबंध को तोड़ता है। Yeah. So when you are convinced, okay, you can divorce. जब पूरी तरह से एकदम आश्वस्त रहते हैं नहीं अब ये संबंध नहीं चाहिए, तब हम संबंध का विच्छेद करते हैं। But in the Vaishnavi or Vairagya, यह वैराग्य में तो शरीर है कृत्रिम अत्यंत प्रबल है। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। if one do not separate himself from material enjoyment, it is to be understood that he is not advancing in Krishna consciousness. यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता, तो यह समझना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है। Srila Prabhupada say, if you are attached, if you have attachment only for one kind of sweet, you cannot go in Krishna Loka. श्रील प्रभुपाद यहाँ तक है, एक छोटी सी मिठाई में भी यदि आपकी आसक्ति रहेगी, तो आप श्री कृष्ण के धाम में, कृष्ण गोलोक धाम में नहीं जा पाएंगे। Yeah. He don't say prasadam, he says sweet. श्रील प्रभुपाद ने प्रसाद लिखा, श्रील प्रभुपाद ने मिठाई का। Because many people, he go to the sweet shop to purchase sweet, but no, forget Krishna. तो कई लोग जो मिठाई खरीदते हैं, परंतु कृष्ण के लिए नहीं, खुद के लिए। You see in the shop, the sweet shop, is always much people there. मिठाई की दुकान में आप बहुत भीड़ देखते हैं हमेशा। But not everybody go in shop to get some sweet and offering to the Lord. Not everybody. अधिकांश लोग मिठाई खरीदते हैं तो अपने रुचि के साथ मिठाई खरीदते हैं, ऐसा भाव नहीं रहता कि श्री कृष्ण के लिए हमें अर्पित करना है। That is according with the consciousness. The devotional, when the mind hear the word tapasya, then become afraid, want to run away. जब मन शुद्ध नहीं होता तो लक्षण होता है, जैसे मन तपस्या तो दूर भागने की कोशिश करता है, डर जाता है। तपस्या नाम से डर लगता है, यह शुद्ध मन का लक्षण है। The mind want comfort. मन को हमेशा आराम चाहिए, बड़ी एकदम सुविधाजनक जीवन। One should fast on the 2 Ekadashi day, which fall on the 11th day of the waxing and waning moon, and on the birthday of Lord Krishna, Lord Rama, and Chaitanya Mahaprabhu. उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम और चैतन्य महाप्रभु जन्मदिनों में उपवास करे। There are many such fasting days. ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। Yogena mean by controlling the sense and mind. योगी का अर्थ है इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके। Yoga Indriya Samyamaha. Yoga Indriya Samyamaha. Yogena implies that one is seriously absorbed in the self and is able by development. In this way, one becomes fixed devotional service, and his faith cannot be shaken by any material allurement. That means the faith must to be developed. Yeah, and that is the development of faith start by sadhu sangha. श्रद्धा का विकास कैसे होता है? जब हम प्रगाढ़ साधु संग में आते हैं.
Without sadhu sangha, the faith cannot be developed. साधु संग के बिना श्रद्धा का विकास हो नहीं सकता. And also knowledge, we get knowledge by association in sadhu और sangha. ज्ञान के सभी प्रकार विभिन्न प्रकार के ज्ञान है वो हमको साधु संग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं. So there is two joys, sadhu sangha or jnana sangha. तो दो प्रकार के हैं, एक तो साधु संग है और दूसरा जन संग होता है. Yeah. Sri Rupa Goswami says jnana sangha. He say about jnana sangha, he say it's better to be in one cage with one snake and not associate in jnana sangha. श्री रूप गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि संसारी लोगों के संग से तो अच्छा है कि एक पिंजरे के अंदर खुद को बंद कर दिया जिसके अंदर भयानक विषय का सर्प हो. But that is difficult to understand maybe for people in general because we are born in jnana sangha. The most of people are born in अधिकांश लोग jnana इस sangha. बात को ठीक तरह समझ नहीं पाते क्योंकि वो जनसंघ में इसी संसार में लोगों के बीच में उनका जन्म हुआ है तो लोगों से दूर रहना कितना आवश्यक है संसार में उसलिए इसका महत्व समझ नहीं पाते. So many people never was in sadhu sangha. अधिकांश लोग जो कभी साधु संघ की महत्व जानते भी सोचते भी नहीं. And that is dangerous. This is dangerous, especially for young people. और विशेष रूप से ये संसार लोगों से बहुत ही भयानक है, विशेष रूप से युवाओं के लिए. Yeah, young people, now the system put everybody in the school. Study. से युवा वर्ग आजकल देख रहे हैं हर इस तरह की व्यवस्था बनाने की हर किसी को स्कूल में डाल दिया जाता है. Become professional. और फिर व्यवसाय बनाने के प्रशिक्षण मिलता है. Studying 20 years, 25 years. 20-25 साल जो एक गधे की तरह पढ़ाई करते रहो. Become professional. और फिर इस तरह से व्यवसायी बन जाओ, संसारी बन जाओ. Yeah. And like that, after 20 years studying, 25 years, you become employed of Shudra. और फिर 20-25 साल ऐसा सर पटक के पढ़ाई करो और उसके बाद में एक शूद्र व्यक्ति के यहाँ चाकरी करो. Yeah. This is the actual reality, all in the 5 continents. This is the reality. यही संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आज देखने के लिए यही वास्तविकता है, सच्चाई. That don't mean we agree also people studying, okay. इसका अर्थ ये नहीं हम भी पढ़ाई के पक्ष में हैं. We have actually in International Society for Krishna Consciousness, many young people come and start to chant in the Mahamantra Hare Krishna. यहाँ पे पढ़े लिखे कई युवा वर्ग के भक्त आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ में नाम जप शुरू करते हैं. And that is very good. और यह बहुत अच्छा भी है. Yeah, many times I go to visit the voice center where. और कई बार मैं आजकल वॉइस सेंटर होता है यहाँ पे युवा विद्यार्थी तो वहाँ पर जाकर रहते. And I like very much to be associated with these students. और ऐसे कृष्ण भक्ति में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों से मिलने मुझे बहुत आनंद मिलता है. Most of them are serious. और अधिकांश जो विद्यार्थी बहुत गंभीर होते हैं भक्ति में. Yeah. Then start to use the intelligence in the right way. क्योंकि वहाँ सही मार्ग में बुद्धि का प्रयोग करते हैं. And that is very important because the only freedom we have is to use the intelligence in the right way. और यही सही है किस तरह से सही तरीके से हम अपनी बुद्धि को सही मार्ग में लगाएं. Otherwise the mind will be always will project, will do some project, some new program, some new attraction. But the intelligence is superior of the mind. So these students are fortunate in voice.
तो ये युवा विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली है जिनको वॉइस में रहने मिल रहा है। But then get doubt. परंतु फिर उनके Indirectly, father, grandfather, then say, अप्रत्यक्ष रूप से देखें वास्तविक माता पिता आजकल के दादा दादी नाना नानी माया की पूजा कैसे करना है ये सिखाते हैं। yeah, worship Maya Devi. And after some time, then found one devotee, and the devotee say, worship Bhakti Devi, no Maya Devi, Bhakti Devi. फिर जिंदगी भर उनको माँ बाप ने माया की पूजा करो सिखाया, और वो यहाँ पे जैसे आए तो भक्तों ने बोला भक्ति की पूजा करो, भक्ति देवी की, माया देवी की नहीं। So there is doubt. They want to know. तो फिर वो जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है। Some time ago, one young student in voice, he asked me, if I become devotee full time, what I will do after 20 years? एक विद्यार्थी से मिला वॉइस में, उसने कहा कि अगर मैं आपकी तरह अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं भगवान की सेवा में, 20 साल के बाद मैं क्या होऊंगा? So I told them, if you don't become what you will do after 20 life? अगर तुम पूरा अपना जीवन समर्पित नहीं किए तो 20 साल बाद की बात कर रहे हो, परंतु तो 20 जन्म लग जाएंगे फिर। Yeah. So it's very important to go to the school, college, learn something. ये महत्वपूर्ण है कि स्कूल कॉलेज में जाके कुछ शिक्षा को ग्रहण किया जाए। But he must to get association after this period, get association with sadhu sangha. परंतु अत्यंत आवश्यक है युवा विद्यार्थी को बहुत अच्छी तरह से साधु संग मिले, भक्तों का संग मिले। Other way, if he continue, these young devotees in voice, then morning time, sadhu sangha, afternoon, jhana sangha. यहाँ जो युवा विद्यार्थी थे, सुबह में साधु संग करते और दिन में बाहर जाके फिर जैन संग करते। So the situation for that sometimes then get doubt. और इस तरह से संसारी लोगों के बीच में भी व्यवहार करने से उनके मन में भक्ति के विषय में संशय आ जाते हैं। Yeah, the devotees, full-time devotees, then are always in sadhu sangha. जो पूर्णतः मंदिर में अपना जीवन समर्पित किए, वो लगभग पूरी तरह से हमेशा ही साधु संग में रहते हैं। Yes, but these young students are morning sadhu sangha, afternoon jhana sangha. पढ़ने नौकरी करने वाले लड़के होते हैं, सुबह के समय साधु संग भले करे, तो दिन में संग करते हैं। But after some time, then by practice every morning, do programs, spiritual program, chanting the Mahamantra, Hare Krishna, then start to purify the consciousness. नियमित साधना से, नाम जप करने से और फिर इस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने से धीरे-धीरे वो शुद्ध हो जाते हैं। So Krishna help. और फिर श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं। And then get some vijnana. और फिर उनको कुछ अनुभव होता है, ज्ञान का, विज्ञान प्राप्त होता है। So slow then go out of this cage where there is one snake. तो यह विषय सर्प का जो पिंजरा है, उसमें धीरे-धीरे बाहर निकल जाते हैं। Yeah. The tendency of the soul is to be attached. ये बात पूर्ण करके आत्मा का स्वभाव है कि वो किसी न किसी से आसक्त रहेगा। And this tendency is constitutional. और यह प्रवृत्ति जो है वो वैधानिक है, शाश्वत है। You cannot delete that. इस स्वभाव को, इस आत्मा की मूल प्रवृत्ति को आप निकाल नहीं सकते। So in this material world, wherever there is one person, he must be attached, because this is the tendency of the soul. तो इस जगत में जो भी व्यक्ति रहता है, वो निश्चित रूप से किसी न किसी से आसक्त रहता है, क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव है।
And there is Maya Devi is very expert to offering different kind of attractions. तो माया देवी सदैव तत्पर रहती है विभिन्न प्रकार के आकर्षण देने के लिए। So how to control the sense and mind. किस तरह से मन और इंद्रियों का संयम किया जाए। Rishikena Rishikesha Sevananga Tir Uchate. By serving the master of the sense, you can control the sense. इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने से इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। Yeah. Enjoyment, material enjoyment. There is agent of enjoyment. भौतिक जगत जो है ये भौतिक भोग विलास का एजेंट है। The stomach is one agent of. हमारा पेट जो है वो भोग का एक एजेंट है। You want to enjoy. निरंतर इस संसार भोग करना चाहता है। Yeah. Genital is also one agent of the. जनेंद्रिय ये दूसरा एजेंट है भोग का। Angry also is one agent of enjoyment. Angry. क्रोध भी ये Crawl. क्रोध एजेंट है माया का भोग विलास का। The tongue also. जीवा एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट है माया का। The word also. जो शब्द अपने मुख से निकलते हैं ये भी माया के खींचने वाला एक साधन है। And between these 5 agents और इन 5 एजेंट के बीच में हम फंसे रहते हैं। of sense gratification, there is the mind. और ये 5 इंद्रियों के बीच में इंद्रिय भोग का इंद्रियों को भोग करने का सबसे प्रमुख साधन जो है वो मन है। The mind is the queen. The mind is the queen between this. और इन सभी एजेंट की रानी है। Bacho vegam manasa kroda vegam jiva vegam udarupasta vegam etta vegam yovisa etta diraha sarvamitimam pritivim sasishyat. This, if you control, this slok say, if you control these 6 agents, you are able to have disciples all in the world. उपदेशार्थ रूप में स्वामी प्रथम श्लोक में 6 वेग का बात की है और जो इन 6 वेगों को संयमित कर लेता है संपूर्ण जगत में वो गुरु बनने का अधिकारी हो जाता है। Yeah. Without help of Krishna, nobody can superate all these difficulties. Without help, superior help of Krishna, nobody can control. For that is important to be always in sadhu sangha. Because Krishna acts by his devotees. When we are in sadhu sangha, every day we get some information, some realization. That is the important to be in sadhu sangha. Some people like to do spiritual progress, but he don't like so much to be with devotees in sadhu sangha. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहते हैं परंतु वो भक्तों के संग में नहीं रहना चाहते। They want to be independent. वो स्वतंत्र रूप से अपने अकेले रहकर करना चाहते हैं। I chanting, I studying, and मैं अकेला जप करूँगा, मैं अकेला पाठ करूँगा। I know what I have to do. You send some SMS. I chanting, I studying. I don't need to be with this. मैं जप करूँगा, मैं शास्त्र का अध्ययन करूँगा, मुझे ये सब भक्तों के संग की जरूरत नहीं है। Look the aspect with no hair, shave the hair. ये सब टकले इनके बाल भी नहीं देखो। This strange clothes. ये विचित्र कपड़े पहन के बैठे हुए। No, I will do my
progress मैं separate. खुद अपना घर में आराम से बैठ के प्रगति कर लूंगा। This is the Maya Devi programs. ये माया देवी दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग कर देती है इस तरह Yeah. से। On the beginning, some people think like that. शुरुआत में हर कोई ऐसा सोचने लगता है, I will be independent, मैं स्वतंत्र रहूंगा and I will reach first of them. और सबसे आगे पहुंच जाऊंगा, ये सब तकलीफ पीछे रह जाएंगे। Yeah. In the movement of Sri Sri Gaura Nitai, the process is perfect. और श्री श्री गौर निताई की संकीर्ण आंदोलन की जो विधि है वो पूर्ण है। Dasa, 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 nudas. दास दास दासानुदास। Cannot be independent. तो कोई भी वास्तविक है शास्त्र में स्वतंत्र नहीं रह सकता। If you want to be independent, 20 जीवन तक आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, he gave rope. Okay, जितने आपको स्वतंत्र इतना वो रस्सी को ढील छोड़ देंगे। you want to be independent. Okay. तो और ढील छोड़ दे रहा होगा। All desires. क्योंकि वास्तविक श्री कृष्ण हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। Even if you want to be independent, he will give you chance to be अगर आप independent. स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहे हैं तो कृष्ण वहाँ भी आपको अवसर प्रदान करेंगे। Yeah, but sometimes he pull the rope, परंतु कभी-कभी रस्सी में खींच लेते हैं, टाइट कर देते हैं। and there is problem. और फिर उस समय जब हमारा स्वतंत्र पे रोक आ जाती है तो फिर हमको कष्ट लगता है। We saw that on the last 40, 50 years, many people, when Krishna say, okay, now you surrender, and हमने 40-50 pull the rope. वर्षों में देखा है, जब भी भगवान श्री कृष्ण किसी चीज में हस्तक्षेप करते हैं और उसको अंदर से यहाँ निर्देश देते अब तुम पूर्ण शरणागत हो जाओ। If you get no knowledge, really said, Vigyana, if you get no Vigyana, you will get problem. और जिसको अनुभव नहीं होता है ज्ञान का, भक्ति में अनुभूति नहीं आती है, जब उस शरणागति का आदेश दिया जाए तो उसे कष्ट होता है। So for that is important to be always in sadhu sangha. इसलिए बहुत आवश्यक है सदैव अपने को भक्तों के संग में रखा जाए। Some people is devotee, full-time devotee. कुछ भक्त पूर्ण रूप में ना अपना जीवन समर्पित करते हैं सेवा में। Another come 1 hour, 2 hours every week और ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में 1 घंटे या 2 घंटे लाएंगे to be in sadhu sangha. भक्तों के संग में। Another come only for Sunday feast. और ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार रविवार को चेहरा दिखाएंगे। Some people come only in Ekadashi. You see Mongolite. Mongolarti, you see in Ekadashi, there is some more people. Yeah. Another come only for Janmastami. So everybody get Krishna is the more kind person. He get possibilities for everybody. According with your desire. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In this slok we read today, there is important word. Jnanena. In knowledge. Drishta tatvena. With vision of the absolute true. Vairagyena. With renunciation.
Baliyasa, बलियसा very strong. अत्यंत दृढ़तापूर्वक Baliyasa, Bala Rama. Baliyasa, very strong. बहुत ही शक्तिशाली Tapayuktena, तपोयुक्तेन by engagement in austerities. तपस्या में लग के All these were very, very important एक शब्द आज के श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है for those who practice Bhakti Yoga. जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए आज के श्लोक का हर शब्द महत्वपूर्ण है The mind don't like austerities. मन का एक स्वभाव है कि मन को ज्यादा तपस्या करा जाए ज्यादा कष्ट लेने नहीं जाता हूँ Yeah, but Srila Prabhupada say tapasya is the beauty and the riches of those who are in the way of renouncement. जो भक्ति मार्ग में होता है वास्तव में उनके लिए तपस्या उनका सौंदर्य और उनकी संपत्ति है And the devotee who perform much devotional service, those who are concentrated, then understand the meaning of tapasya. जो गंभीरता से भक्ति में लगे रहते वास्तविक वे ही तपस्या का सही अर्थ समझ पाते हैं Because then get realization by tapasya. क्योंकि तपस्या करने से बहुत अधिक अनुभूति और साक्षात्कार आते हैं भक्ति में Behind tapasya is always the mercy of the Lord. क्योंकि तपस्या का विपरीत श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है I remember when I was more young, and I was near about 10 years with group of Sankirtan party. जब मैं बहुत जवान था मुझे स्मरण है कि मैं संकीर्तन का जो दल था लगभग 20 भक्तों का उनके साथ में रहता था And in Europe, we perform 3 hours in morning, 3 hours afternoon. Book distribution. और वहाँ पर यूरोप में हम जब रहते थे 20-25 बार सुबह 3 घंटा और दोपहर को 3 घंटा ग्रंथों का वितरण करने के लिए जाते थे Yeah, 3 hours in the morning we knock the door. तो सुबह 3 घंटे जो है घर पे जाते थे दरवाजे ठोक के फिर लोगों घर में जाकर ग्रंथ वितरण करते थे Or ring the door. और घंटी बजाते थे And you wait who will open the door. और प्रतीक्षा करते थे कौन दरवाजा खोलेगा And you must be very, very alive and enthusiastic. बहुत उत्साही और आनंदित Catch the mind of those who open the door. Catch जो the दरवाजा mind. खोला उसके तुरंत मन के भावना को पकड़ के उसको प्रचार करना होता है Immediately तुरंत उसी समय before he closed the door. पलट के दरवाजा बंद करके पहले इसको पटाना जरूरी है And you wait because you sometimes open the door one children. और कई बार ऐसा होता है दरवाजा खोलते हैं तो छोटा बच्चा ही सामने दिखाई देता है Yeah, sometimes old man. कभी को बुढ़ा होता है जो दरवाजा खोलता है It's very good experience. This tapasya is ये very बहुत ही बढ़िया तपस्या है इसमें बहुत सारे साक्षात्कार आते हैं सबसे श्रेष्ठ तपस्या ग्रंथ वितरण every door is one new movie. हर दरवाजा खोलने पर एक नया सिनेमा दिखता है You don't know who will open the door. आपको पता भी नहीं था बिल्कुल अनपेक्षित दरवाजा खोलेगा कौन Maybe Prahlad Maharaj. Maybe Prahlad और opened ये it. दरवाजा खोले शायद प्रहलाद महाराज की भावना भक्ति भावना जैसा अलग हो सकता है Or maybe Hiranyakashipu. या फिर हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति वाला भी हो सकता है दरवाजा खोलता है Yeah. So during 3 hours morning, 3 hours afternoon, we do knock the door. 3 घंटा सुबह और 3 घंटा दोपहर को इस तरह से द्वार पे जाकर हम दरवाजे ठोक के प्रचार करते थे Yeah. After finish the day, devotees come in one car and you go back to the और temple. पूरा दिन इस तरह ग्रंथ वितरण करके सब एक गाड़ी में बैठ जाते थे और हम वापस मंदिर जाते थे So there you start to count the score. और फिर हम गिनते रहे किसने कितने ग्रंथ वितरण किए And mark how many book, small, big one. छोटी किताबें medium. कितने की बड़े ग्रंथ कितने गए And you come back to the temple और फिर संध्या को सब मंदिर में आ जाते थे and you give all the Lakshmi you collected.
और सब जितना भी लक्ष्मी आपने इकट्ठा किए सब के सब वहाँ पे सुपुर्द कर देते हैं। Also the coins, everything. यहाँ तक कि छोटे सिक्के हुए को दान दक्षिणा में वो भी आप जमा कर देते हैं। In this moment you realized what mean tapasya. और इस क्षण में जब आप इस सब कुछ सुपुर्द करते हैं तब आपको साक्षात्कार होता है तपस्या क्या होती है। Like Srila Prabhupada said, tapasya is the riches and the beauty of the life. जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक तपस्या भक्ति जीवन का आभूषण और संपत्ति है। In this moment you are more rich, the more rich person in the world. और जब इस तरह से आप श्रील प्रभुपाद ग्रंथों को वितरण करते हैं, संध्या को सब कुछ सुपुर्द कर देते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनी व्यक्ति आप बन जाते हैं। And you understand how is beautiful life. और तब मुझे अनुभव होता है कितना सुंदर ये जीवन है, आनंदमय जीवन है। Every young devotee get opportunity to knock the door. Don't. हर युवा भक्त को अवसर मिलता है कि घर-घर जाकर इस तरह से दरवाजा खटखटा के ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। Don't miss this opportunity. और इस स्वर्णिम अवसर का गंवाना नहीं चाहिए। You will understand what is riches and beauty. तब आपको समझ में वास्तविक जीवन की संपत्ति और सौंदर्य क्या है। And you will feel the protection of Nityananda. और साक्षात नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय संरक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव आपको होता है जब आप इस तरह से प्रचार करते हैं। Never more you will do never in your life you will do one more important experience. और इससे बड़ा इससे महत्वपूर्ण अनुभव संपूर्ण जीवन में आपको कभी नहीं होगा। For that Srila Prabhupada, he say, if you want to please me, distribute book. यही कारण था हमको ये दिव्य साक्षात्कार हम प्रदान करना चाहते थे, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ग्रंथों का वितरण करो। From the beginning of ISKCON, devotees start to get this experience. और ISKCON में विशेषता रही पहले दिन से भक्तों को यह दिव्य साक्षात्कार अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता था। First day you go in to distribute book, the mind say, I am not selling book. I am not born to selling book. मैं कोई किताबें बेचने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, इस तरह से मन तर्क देता है जब पहले दिन ग्रंथ वितरण कर जाता है। Yeah. And the mind will do some, before to go in Sankirtan, before to go to distribute book, the mind will do some personal programs. तो जैसे ग्रंथ वितरण का समय मन आपका इतना चाहता है कुछ ना कुछ अलग से आपका प्रोग्राम बना देगा। नहीं ग्रंथ वितरण अभी नहीं करना है, कहीं और कुछ करना है। Today is too hot. आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है हम लोग। Yeah. In Europe, sometimes the man say, "Oh, today is snow." और मन यूरोप में जब रहते थे, वहाँ पे मन में कर देता था, इतनी सारी बर्फ गिरी हुई, बहुत भयंकर ठंड है। Today is festival. People concentrate. आज बहुत बड़ा उत्सव है, कोई ध्यान नहीं हमारी बातें सुनेगा, सबको बाहर शोर चल रहा है। But after few years practice, परंतु जबरदस्ती जब कई वर्षों के अभ्यास करते रहे तो उसके बाद you don't hear anymore your mind. फिर आपका मन गड़बड़ करना बंद कर देता है। You carry your book and go out. बस किताब उठाओ और निकल जाओ। Yeah. And it is the best way to satisfy Srila Prabhupada. और यह सबसे श्रेष्ठ पद्धति है श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने की। Every service is important. प्रत्येक सेवा का अपना विशेष महत्व है। Even those people who come in the temple in every day offering one hands of rice. यहाँ तक कि कोई साधारण भक्त मंदिर में आता है और थोड़ा सा चावल भगवान के चरण अर्पित करता है, उसका भी महत्व है। It's very important to come every day in the temple and offering one hands of rice. ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए और भगवान के समक्ष एक मुट्ठी चावल अर्पित करना चाहिए। Or come every day and offering flowers. या House you see and परंतु आवश्यक है यहाँ सामने आप पीछे आपके जितने घर दिख रहे हैं सभी जगह जाके दरवाजे पर ठोके। the door you say,
that is for you. और तुरंत ऐसे लगे होते हैं ये आपके लिए तुरंत उनके हाथ में पकड़ाई And you will understand is a very, very brilliant book. I enjoyed during 10 years. मैंने 10 वर्ष तक ये आनंद में अनुभव किया अपने जीवन में But after coming other service, other thing. परंतु उसके बाद में कई अलग प्रकार की सेवाएं आती थी पहले 10 वर्ष में केवल ग्रंथ किया But I remember that time like the best time. परंतु आज भी वह जो पहले 10 वर्ष मेरे रहे ग्रंथ किए वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे During few years we take a rent big house with one group of 22, 23 brahmacharis. और एक समय हमने जो किराए का घर लिया था जहाँ पे लगभग 20 से 23 ब्रह्मचारी एक साथ रहते थे 2 brahmacharis stay in house, then don't go out, stay in the house to cooking. केवल 2 ब्रह्मचारी जो सुबह शाम कुकिंग के लिए रहते थे वो ही And another stayed just to wash the dhoti kurta of the other 22, 23 brahmacharis. दो भक्त कुकिंग के लिए पीछे रह जाते थे और एक ब्रह्मचारी से रहता था जो 20 से 22 भक्तों के कपड़े धोती कुर्ता धोता था He told me he do something like 3 or 4 machine, machine to wash. 3-4 वॉशिंग मशीन थे उसमें डाल के धोकर उसका धोने का काम था And every kurta every dhoti got the letter here, no? और हर धोती कुर्ते में उसका नाम लिखा था किस ब्रह्मचारी का धोती किस ब्रह्मचारी का कुर्ता है And when we come back on evening, और जब हम शाम को आते थे in every place got your set was सभी का कपड़ा धुलकर एकदम फोल्ड करके अच्छी तरह से तैयार उसकी जगह पर मिलता था उसको the set was there. पूरे तैयार रहते थे Very good organization. बहुत बढ़िया व्यवस्था थी And when we come back every afternoon, every evening, there was feast. और हर रोज शाम को बहुत बढ़िया फीस्ट होती थी महाप्रसाद मिलता था Because that 2, 3 दो ब्रह्मचारी में वही काम था उनके लिए बढ़िया प्रसाद then was expert in the kitchen. Expert. Make. Yeah. One devotee go in another region to take a rent one house. इस तरह से हम एक जगह पूरी कर लेते शहर पूरा कर लेते तो उसमें से एक भाग जाता था और दूसरे एरिया में फिर किराए का घर लेता था And this devotee was very expert. और वहाँ बहुत एक्सपर्ट था He know where to take the और उसे house. पता था कि किराए का घर कहाँ पे लेना चाहिए So he always find house little bit outside the town. शहर से बाहर कोई किराए का घर लेता था Because he know we perform a strong kirtan. क्योंकि उसको पता था कि हम बहुत जोर से कीर्तन करते हैं तो शहर के बीच में लेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे 23, 22 people kirtan. जोर से धमाधम कीर्तन करते थे 2 mridanga, everybody dancing. जोर से उछल के नाचते थे सब So he took always a rent house little bit शहर से बाहर far. जहाँ पर किसी को आपत्ति ना हो धमाधम कीर्तन से Yeah, was a festival. और हर रोज का ऐसा उत्सव रहता था If you are really concentrate in bhakti yoga, you will understand in Krishna consciousness, every day is one festival. अब पूरी तरह से एकदम भक्ति में प्रगाढ़ रूप से लगे रहते भगवान की सेवा में आपको अनुभव होगा कि प्रत्येक दिन एक उत्सव रहता है Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna? किसी को प्रश्न Yes. If the jobber do their job with Krishna consciousness, then it is not
because the Jabbers and the supporters are the Krishna conscious program. Can you tell me what he say? क्या नौकरी करने वाला हिंदी में बता दीजिए ना कोई भी जो काम करने वाले हैं, कल्टीवेटर्स है, व्यापारी है, घर गृहस्थी वाले वाले हैं, ये अगर जॉब कर रहे हैं और वो जॉब करते वक्त उनकी कृष्ण कॉन्शियस में की भावना है, तो क्या वो गलत है क्या? और जबर जो लोग हैं ये कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम चलाने में सपोर्टर है। हाँ, दान दक्षिणा देता है ना। हाँ, दान दक्षिणा, ठीक है, समझ। The congregation devotees, like Took out micro. congregation devotees, the grahasthas, those who work outside, they earn the money, they contribute for the movement, Yeah. and practice their own Krishna consciousness. They are also on the same platform. Of course. गृहस्थी में रहते हुए अपना नौकरी व्यवसाय करते हुए मंदिर को भी सहयोग करते हैं, साथ में भक्ति अभ्यास करते हैं, वे भी उसी प्रकार से लाभान्वित होते हैं। 95% of devotee are grihastra. कृष्ण भगवान आंदोलन में देखा जाए 95% जो Look that. है वे सभी गृहस्थी है। Look that. 1, 2, 3 brahmachari. लाल कपड़े वाले कितने? 1, 2, 3, 4 बस। 3 brahmachari in the middle of all the others. भक्तों में से 3 ही लाल कपड़े वाले ब्रह्मचारी थे। So, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रमाण गृहस्थों में अधिक होता है। yeah. So for that, I told before, I say, Krishna give opportunity. Someone, he do service 1%. इसलिए मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी को सेवा अवसर देते हैं, कोई 1% करता है। Others do service 20%. Because he